वेलकम बैक आज पुणी थे ओडिशा साइंस रे नुआ सेशन नहीं के मैं आसीछु अपन मन मन थियो लास्ट ईयर वेब अतिथि सीजन 1 करथिलु एंड दैट वाज एन अमेजिंग सेशन अमेजिंग सीरीज थिला बहुत सारा लोक हम सहित जोड़ी हेतले अनेक सारा लोक क्वेश्चन करथलु तांको आंसर पाइथलु एंड एई थरा एई वर्ष वेब अतिथि सीजन 2 रे आज हम आरंभ करछु हम सहित जोड़ी हेचन जने खास मेहमान तांको परिचय भी आपन करे देबी किंतु ता पूर्व टिके आपन कहि दे कि गोटे टर्म आपन बहुत सारा सुनिथिबे से टर्म ता होची एंडोमेट्रियोसिस यस मेडिकल टर्म टा कौन जिनसा क्या जना नहीं केमी तार क्योर हम कौन हम बहुत लोग कन्फ्यूजन था आज तार विषय डिस्कस करिया आम संगे जोड़ी वेरी इंपोर्टेंट गेस्ट नन अदर देन डॉक्टर GSS महापात्र सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर सर वेलकम टू ओडिशा साइंस थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर मते प्रथम कथा तो होची कि आमे चर्चा करिया आज एंडोमेट्रियोसिस ऊपर ताको नेकी डिटेल आपन को जानिया मते सर टिके कोन तो यू आर आल्सो द फाउंडर ऑफ L.I.F.E जो हम क्वेश्चन लैप्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी फिब्रॉइड्स एंड एंडोमेट्रियोसिस आप जैसे टिके मते शॉर्टर कह दियंतु To begin with, I am the founder of Odisha Center for Life. Mane L.I.F.E stands for, as you said, laparoscopy, infertility, fibroids, and endometriosis. But the special focus is always on endometriosis because normally fibroids or treatment by infertility treatment we get to know from many people. The problem with endometriosis is it is a disease which is found in around 1 in 10 females. Imagine, and more than 180 million in India. Forget the whole world. Right from Queen Victoria to Marilyn Monroe to Katrina Kaif to other Bollywood actors to the common person, everybody is involved in endometriosis and has suffered from endometriosis. So whenever a patient has severe pain, which is not subsiding with mild analgesics or painkillers during menses, we always tend to ignore it. हमें सब घरे कहि दबे तो मिछ कोचु तो स्कूल जिबाक चाहुनु बोली तू बदमाशी करछु ऑफिस तो मैं अवॉइड करिया चाहूछु बोली तुम नॉर्मल पेन किलर्स खाई करी तुम अवॉइड करूछो नो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ए साइलेंट किलर द प्रॉब्लम विथ एंडोमेट्रियोसिस इज इट टेक्स 7 to 9 years to manifest as symptoms before it has entered into your body. So it enters your body at around suppose 16. By the time you will face the pain, it is you are already 25. So 9 वर्ष धरी से उई वाला it will just spread inside your body. So the patients they go to a routine gynecologist. The gynecologist advises some painkillers, does an ultrasound resolution सेते भलो न थाए. Normally all well. नाइ मत तुम किछि का सुविधा तुम painkiller का. This is how she finally she does not know what is happening and she finally lands up in a difficult surgery later on. So if a patient has severe menses, debilitating pain during menses, she has pain during intercourse, if she has always got a chronically पेट सबले फुली रहला बेले लाउची ताको हम एंडोबेली को, if she has severe pain during urination or passing motion or bowel during menses, then she probably has endometriosis. So as one of the very few people who specialize in endometriosis, if they're listening to our program today or watching it, then I would request them to have a relook at the symptoms and consult a specialist immediately. तो सर जंती एंडोमेट्रियोसिस कोन आपन कह देले मुखली जानि मुछन कि जंती आपन किछि सिम्पटम्स कह देले जेनेरिक सिम्पटम्स हमें कोन देखन एंडोमेट्रियोसिस रे कोन थाय जनरल सिम्पटम जने जानिबो केमति कारण जंती आपन कहले कि इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम एटा एमती डिजीज नै कि इमीडिएटली बाहरिबो सो इट टेक्स 8 or 9 years सो सेही पीरियड भितरे को सिम्पटम्स हम देखा गले दे विल थिंक कि नहीं हमको ट्रस्ट मी सो 13 to 19 years रो एज रे 5% of the endometriosis am found 13 to 19 imagine the girl in their teens. So they come with severe pain and the ultrasound says it is absolutely normal because it starts with small deposits in your body, so which cannot be detected even by on an MRI. तो आमे जब routine gynecologist पाको जाऊ तो patient से कहते कि किछि नहीं. So the pain, let me tell you the symptoms. 1, it is severe pain in the lower abdomen, a stabbing pain, a shooting pain, जोटा कि हम तळी पेटरू स्टार्ट है कि अंटा बा थाइज को रेडिएट करिब to the leg. And it starts just prior to menses and among periods of day 1 and day 2 को severe होबा इतने severe जे patient उठी बसी पारिबे नै चाली पारिबे नै स्कूल जाई पारिबे नै ऑफिस जाई पारिबे. 2, she will have severe pain during intercourse if she is married, especially deep within the vagina. 3rd, she will have severe pain while passing urine. The urine pass करिला बेले को motion झाड़ा गला बेले झाड़ा बसला बेले को during menses, that is called dysuria or dyschezia. 4, जो जदि से माने विवाहित होइतिबे तले इनफर्टिलिटी आसीबो 30% of the patients of infertility रे हमें endometriosis so they are pregnant ताकर हम endometriosis कोन होबे the structures get stuck to each other सब uterus ovary tubes ना लाखी जानती to each other तो लाखी गले कोन the normal anatomy is lost tubes जो fertilization हुए
तार ओरिएंटेशन खराब हो जाए सो पेशेंट्स हैव इनफर्टिलिटी सो आउ लास्ट है पेशेंट को गोटे सब बेले लागिबो जे मो पेटटा फुले की रहउची ब्लोटेड रहउची कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम मोशन क्लियर होनथबो ताको में ड्रेडेड एंडोमेट्रोसिस जो बेली तो जेमती माने मु भाबुची आपण जो लेमन लैंग्वेज में मते बुझेले वर्तमान आई एम श्योर कि जोने देखुते से माने बुझी होते सो टेल मी कि हाउ डिड यू गेट दिस एक्सपर्टीज इन एंडोमेट्रियोसिस endometriosis used to fascinate me मु सबले भाबे जे पेशेंट सर्जरीज होउची problem was whenever when we in our early years हमें देखतु जेतले में सर्जरी करतु patients used to come back to us 2 वर्ष भीतर relapse हो जाए why because we did not understand that this is ourselves as gynecologists even today the medical fraternity is not so sure about endometriosis so what happened was then I understood जदि हमें न करूचे जदि हमें endometriotic surgery जदि cleanly बा पूरी complete न करूचे the relapse is much faster if the relapse is up to 90% within 2 years but it is less than 1% if it is done in fantastic pair of hands who understands the disease what the mind does not know eyes cannot see so this is what happened so I went to Italy I went to France I went to Germany got trained under mane both stalwarts like Atithi different stalwarts man endometriosis specialize karanti so seman ko under dekhile mujhe we need to become more expert तापर हम ट्रीटमेंट करते सो यूरोपियन एंडोमेट्रियोसिस लीग रो गुटे मेंबर वर्ल्ड एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी रो मेंबर एही सब जिंस गला पारे आई अंडरस्टूड दैट यस दिस शुड बी ट्रीटेड इन ए डिफरेंट वे नॉट कि वन साइज फिट्स ऑल समस्त को सही गुटे ट्रीटमेंट करिले एंडोमेट्रियोसिस विल नॉट बी एबल टू बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली दैट इज ऑल सुपर सर तो मते कोंतो कि अने रेगुलर बेसिस जेते हम देखंती एंडोमेट्रियोसिस कथा गुटे जिंस नजर पसे कि डॉक्टर माने एडवाइस करते लैप्रोस्कोपी पे या फिर अधिकांश समय ओपन सर्जरी कथा भी हम कहा जाए बट व्हाट इज द न्यू रोबोटिक इनपुट हियर रोबोटिक विषय में सुनछु रोबोटिक सर्जरी एंड अगेन यू नो ओडिसा रे अवेलेबल अछि न अछि इट्स ओके एते क्लियर ना मते कि को रोबोटिक इनपुट इट कोन इफ यू कैन एक्सप्लेन इट थैंक यू सो विथ a lot of pride actually मु कहि परिबी जे for the first time in the field of gynecology on the Da Vinci platform, which is the most advanced laparoscopic robotic platform in the whole world. US FDA ताको approve करतलो 2005 रे हमें सही प्लेटफॉर्म रे for the first time in Odisha गुटे सर्जरी कंप्लीट करलो on 10th of June for a fibroid uterus. Wow. अच्छा तो रोबोट माने नो जे गुटे रोबोट आसी कि तम सहित सम सर्जरी को जेम हम रजनीकांत को देखथिले मूवी रे नो इट इज एक्चुअली ए कैमरा कंसोल थाए सर्जन बसिबे ताको जॉयस्टिक्स जेम हम अंगुठी वीडियो गेम्स रे खेलु तो इट विल एग्जैक्टली बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सर्जन एवं 6 ରୁ 8 फुट दूर रे पेशेंट रो बॉडी ऊपर पेशेंट आर्म्स कैमरा रोबोट रो आर्म्स हाथ जगह थिबो those arms will go into the body patient रो बॉडी भितरे एवं those precise surgeries execute हबो जोटा मु चाहिबी सो मु एबे जो ड्रेस पिंदी छी आई नीड नॉट वेयर ओटी गाउन मते ग्लोव्स पिंदिका दरकार नै मु एई ड्रेस रे बसी की कंसोल रे देखि 3D व्यू रे मैग्निफिकेशन रे जहा देखिबी बा जहा करिबी पेशेंट रो बॉडी रे से हाउ ताले तमे चिंता करियो जे सर व्हाई देन रोबोट व्हाई नॉट लैप्रोस्कोपी नाउ लैप्रोस्कोपी जे तोला में लंबा लंबा इंस्ट्रूमेंट्स हाथ रे देई सर्जरी करियो नो इट इज अराउंड 36 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर तो एते लंबा इंस्ट्रूमेंट को जेतोला में पेट भितरे पेशेंट रो बुलो हम हाथ जको मूवमेंट करे बहुत कष्ट होवे जे हे जाय एट डिफिकल्ट प्लेसेस देयर आर प्लेसेस माय हैंड यू वी आर ह्यूमन बीइंग्स हम हाथ 180 डिग्री 360 डिग्री बुली परिबोनी but robot को तो से हमें जेमिति बुलेबा ता हाथ सेति बुलियो so all those fine precise movements for advanced surgery especially endometriosis सेतरे robotic surgery will stand as number 1 बुझला so जोठी हमें complex procedures करचे सो जोथरे हमें cancers of the uterus और ovary करूचे robots will always hold a special place that does not mean कि laparoscopy खराब laparoscopy has come it is here to stay in future तो जेतोले हमें छोटो छोटो incision रे ऑपरेशन करिवा जल्दी रिकवरी चाहिबा जल्दी भलो लेस ब्लड लॉस चाहिबा मैग्निफिकेशन चाहिबा पेशेंट जल्दी रिटर्न कर जांतु ड्यूटी को ऑफिस को तले laparoscopy जहा robotic will also hold another big edge over the laparoscopy open surgery अपेक्षा laparoscopy always केमिति बेनिफिशियल हैला it used to have small holes छोटो छोटो होल रे बड़ सर्जरी हे जा ब्लड लॉस कम होतला पेन कम होतला पेशेंट रिकवरी जल्दी होतला फास्टर ऑफिस को रिटर्न होतला तो बिल्स भी अपन हॉस्पिटल रे कमी जाउची बिकॉज़ स्टे इन द हॉस्पिटल इज लेस
तो रोबोट भी सही सेम जिंस जे करिवो बट फॉर एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो जगह रे हमें लैप्रोस्कोपी एज ए ह्यूमन बीइंग हम हाथर मूवमेंट जदी लिमिट अछि तले एंडो रिस्ट मूवमेंट्स ऑफ द रोबोट विल हेल्प अस टू रीच सही जो छोट जगह जोटी हम हाथ पहुंची पारन पारिनो थांता सही जगह रे पहुंची के रोबोट विल ऑलवेज हेल्प यू दैट एक्स्ट्रा एज टू डू दो सर्जरीज बेटर तो मु कहूनी रोबोट्स आर ए रिप्लेसमेंट बट दे आर ए वेरी नाइस अल्टरनेटिव एंड ऑप्शन टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो आई विल मु चाहे जो ओडिसा रा ईच पर्सन को हमें रीच आउट करि परिबा एंड हेल्प देम बाय द रोबोटिक सर्जरी एंड प्रोबेबली हमें जो सर्जरी टा बे करिले for non-cancerous conditions, probably Eastern India re hi it a first time Da Vinci platform re gote gynecological surgery is. So huge a matter of pride for us. Super sir. So sethimen sir apanku bahut sara congratulations. I think jo lokane jani nathibe it is obviously new for them and new for us jete ame robotic surgery ko jemti apana gote कहले layman language re ki nahi it is not a robot who is going to do the surgery. It is the doctor ji ki tiki distance rahi yes. But then again bahut sara advantages tar ache. Yes. तो mate kuntu ki like this is if I am not wrong jemti apana कहले ki Eastern India first time pe hochi Da Vinci platform re hochi. So how will it help establish a new milestone in the medical history of Odisha? It was a dream always कि हमें केमती करिबा बोली but unfortunately things were not falling in place हमें robot acquire करि नथिलु so when Apollo Hospital acquired it for the first time so it was a big challenge then to how get trained हमें training नेलु सब सारिलु we launched a program सब जिंस in order in place देखा गला and then finally the success lucky day choose कराल and then we executed the whole set so the patient was but a patient जे कि multiple surgeries आगरु हेई सारथिलानी पेशेंट रो ऑलरेडी प्रीवियस सर्जरीज अछि ता छुआ पिला गोटे छुआ थिले आ फर्दर ताकू छुआ दरकार थिला बट गोटे बहुत बड़ ट्यूमर थिला फाइब्रॉइड थिला गर्भाशय जो एकदम भीतर लेयर कैविटी जोटी की प्रेगनेंसी एक्चुअली रुए तो जदी एते बड़ ट्यूमर ता भीतर रहिबो ताले प्रेगनेंसी रहि परियन सो वी रिमूव्ड दैट ट्यूमर इन लेस देन 1 आवर रोबोटिकली एकदम ब्लडलेसली आ पेशेंट को जतले हम कहलु मैडम काली डिस्चार्ज हेबे पेशेंट कहल नाही सर मु एते भलो छ मते आज डिस्चार्ज कर so she was discharged in less than 24 hours in less than 20 ete painless ete sundar hoye yeah that is the beauty of so mate konti like you said ki mane painless way and bahut hi quickly instead of way so I think jete jo patient asio gote operation kariya pen they will choose for the robotic surgery obviously so mate konti sa kemiti jo benefit hei pare gote patient mane why they will choose the robotic over the other surgeries ओपन सर्जरीज हमें सबले देखिए जतले पुराना काले जतले हमें लॉन्ग आम टीचर्स माने बा तांका सीनियर्स माने करूले ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी एडवांस हे नथला तो सेतले बहुत लंबा पेट माने इंसिजन यूज्ड टू बी ह्यूज यू नो माने नाभिरु आरंभ करी तळी पेट पूरा जो एकदम लास्ट जाए तो जतले आपण एते लंबा चिरी दिया होची तो पेशेंट रो पेन इमेजिन कर पेशेंट रो ब्लड लॉस इमेजिन कर पेशेंट तो 5 दिन बेड रो फास्ट उठी परिबेनी चालीबा तो दूर र कथा तो परिसर नली गोटे कैथेटर लागि रहि जो 4-5 दिन दैट परिसर नली जोटा लागिला कैथेटर ता जो यूरिन इन्फेक्शन हे जीवो पेशेंट 10-12 दिन रहिले ऑफिस जाई परिबे नै हॉस्पिटल रे स्टे लंबा हे गेला तो बिल इज ह्यूज कंपेयर इट विथ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इमीडिएटली द सिनेरियो चेंजेस छोटो छोटो 5 मिलीमीटर होल्स पेन कम faster recovery faster return to duty in finally the bill in the hospital is less robotic surgery carries again that same advantage in fact even lesser pain than laparoscopy but auri complex procedures for example endometriosis but cancers of uterus or jo garbhashaya cancer seta auri advantage tabo so this is the advantage a robotic surgery carry kore over other methods of treatment it is not an option alternative wise it is not a replacement it is a very nice legitimate option to laparoscopy super sir so ये तो थिला सर रोबोटिक कथा जेमति आपण कहले एंड आई एम श्योर जो ने जानि नथले से माने जानिबे एंड दे विल ऑब्वियसली यू नो आउट टिके इच्छुक होबे जानिया पई एंड दे विल चूज फॉर दैट सो मते कोन जेमति एंडोमेट्रियोसिस चर्चा में कहतले द ट्रीटमेंट कथा में कोकले तार आपण कोकले ता सिम्पटम्स कथा हाउ डिफिकल्ट द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस केते डिफिकल्ट थाए ना आपण जो पीरियड का मते कहले 7-9 इयर्स once again से जिनसे बार-बार आसी गोटे एते लंबा पीरियड पे लोक माने जानि पारन तो दैट ट्रीटमेंट असा केमिति होय trust me जहां में देखू when the patient comes to us ना it is only the tip of the iceberg पूरा टोटल टावरी ता बॉडी भीतर थाए तो गायनेकोलॉजिस्ट में नॉर्मल जेबे भी पेशेंट आसंती दे ट्रीट विदाउट सीइंग इट आणि किछि इन्वेस्टिगेशन होए नै हमें नॉर्मल ताको गोटे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रूटीन पेन किलर जेबे पेन हबो खाइ देबो जेबे पेन हबो खाइ देबो बट एज आई सेड अर्लियर एंडोमेट्रियोसिस इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल जदि गोटे यंग फीमेल आसिला
in Odisha at least, or in our part of India, we should be doing a good resolution, good MRI. MRI of the pelvis is very important, and taku read kari paribo jo gote radiologist je ki interpret kari paribe nale semane gote normal study hi dei debe. So that has to be done. We should not be giving all old drugs. I will not take the names, but see drugs jako barambar misuse hi aschi. So what did we do? See medicine jako kon kare na, they mask the symptoms of the disease. Mane patient achi pain, mane disease achi, but patient problem feel karu nai. Why? Because the medicine has masked the symptoms. So what more sobule kahe, absence of evidence is not evidence of absence. Mane but patient jodi pain ho nahi due to the medicine does not mean the disease disappear kar jaichi. Disease the better achi, ame khali medicine ta jogu taku mask karu. The moment se medicine ro effect ta jibo apun 6 masa debe ki borsa debe, the patient will again have the symptoms. So the patient always the treatment, the final treatment for endometriosis is LAPEX, and laparoscopic excision of tissue. Laparoscopic ho ba robotic excision re jetiki endometriotic tissue achi se total ta ko hame remove kari ke patient ro relapse hoba nahi ba recurrence hoba nahi, otherwise she will have severe pain. So as we were discussing, young females, human ekdam young age group, तांकर जदी गुड ओवेरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट बे एंडोमेट्रियोमा हेची, एंडोमेट्रियोसिस रे सेटा स्टेज 4टा स्टेज रु 3 नंबर स्टेज रे सेटा हुए, तले हमें खाली सिस्ट रिमूव करिबा, ओवरी रिमूव करिबा नै. जदी गुड पेशेंट इनफर्टिलिटी अछि, छुआ पिला होउने, बंध्या दोष अछि एवं तार एंडोमेट्रियोसिस अछि, तले मैक्सिमम एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू लैप्रोस्कोपी पर रोबोटिक रे रिमूव करी पेशेंट रो ट्यूब्स के एक्सेस करिया कथा. जदी भलो अछि तले नॉर्मल अलाउ करा जाओ, किबा आईयूआई जदी खराब अछि त आईवीएफ पठे देबा, बट डोंट वेस्ट हर इयर्स because endometriosis tar egg reserve tar sob nashta kar dabo. And finally jodi patient is above 40 age completion eglani chua pila chau nanti se chau chanti mor ei pain ta kebe na ho, tale ame tankor uterus, ovaries ebong other endometriotic nodules jota important khadya nali ko ba joti attach ki thai se sob total remove karile patient pain free hei jibe. Beti kahi deba ku chahe je as endometriotic specialist amar gote pura team achi. We have a colorectal surgeon with me. I have ame gote MRI interpretation gote proper radiologist jo mane से जिनसटा को रीड करी मते कहि दियंती जे सर ए फाइंडिंग अछि. इमेजिन हमें गोटे बैटल फाइट करिया जो विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो दैट बैटल विल बी लॉस्ट. बट जेतले मैं प्रिपेयर्ड कि जाऊ जे हम मु जानि छि मते ए टैकल करबा अछि, तो आई हैव ए टीम विथ मी. सपोज इंटेस्टाइन लागि छि तो कोलोरेक्टल सर्जन, गोटे पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हेले एंडोमेट्रियोसिस रा बेस्ट रिजल्ट्स, मैक्सिमम रिजल्ट्स आसीबो. Superb, sir, superb. Some vertically out of the, I think question जो हमें discuss करके हम खाली जाने चाहिए कि is there anything that we can do to avoid this disease? Unfortunately, not probably, because एटा होची genetically. हमें देखिछु जे grandmothers, sisters, mother जदी सेमानकर अछि ताले से झियर भी आसीबार बहुत चांस अछि. Probably it is linked to genetics. म्यूलेरियोसिस गोटे कांसेप्ट अछि, थियरी जोटी कि हम बेबी जेतले मार पेट नहीं थाए जेतले डेवलपमेंट होची से टाइम रो किछि डेवलप माने किछि पे गड़बड़ हुए, because of which the patient goes on to suffer from endometriosis later. But yes, आमी जदी भलो डाइट रखिबा, देखा जाय रेड मीट, अल्कोहल, कैफीन, प्रोसेस्ड फूड, पास्चराइज्ड फूड, जो आमे जो फूड्स रे हाई अमाउंट ऑफ ऑयल एंड स्पाइस होचे से माने एंडोमेट्रियोसिस को ट्रिगर करंती. तो आमे सेही सब जिन ताको कहबे एंडो डाइट, माने वी शुड अवॉइड दैट एंड फोकस मोर ऑन वेजिटेबल्स, fruits, salads, water, non-spicy, non-processed foods. Tale maybe it will help us, and a good healthy lifestyle. But all said and done, if it has to enter with a genetic mutation re hue, it will surely come into your body. Super. So कोट ना कोट मुझे जानी पड़ेगी कि एटा genetic and plus अपन का eating habit, अपन का lifestyle ऊपर भी एटा काफी depend करेगा. So मतलब we can always modify it. Absolutely. So like we discussed about endometriosis and the robotic surgery, and it clearly upon instead of bujhauchandi, I feel like ki right now I am studying medical. Upon the clearly bujhauchandi, so instead of bujha about and put on a simple line. Thank you, sir. Okay, is there any other disease that you like to deal differently? Yeah, one of my very favorite diseases that I like to treat is polycystic ovarian disease, PCOD. Again, that is another disease which is like an epidemic currently in India or the whole world. Imagine Bombay, Delhi, jagare, out of every young female, 5 young females, 2 janakara polycystic ovarian disease. PCOD achi. The moment a girl walks into my OPD
or if young female walks into my OPD, mu jani jay the patient or symptoms kon complain karibe ଆଉ kon ରୋଗଟା without any diagnosis or investigation. Why? Now most of the people nowadays ଆମ जो sedentary lifestyle हे गलानी हम exercise बेसी करूनु and the Zomato, Swiggy on mobile ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି a lot of chicken butter masala and XYZ ଯାଉଛି. Because of that, most females are overweight for their height and age. So that weight is on the higher side, exercise कम होଉଛି, so there is always this positive balance in the body instead of a negative balance, and patient overweighting ताकर excess जो hormones था, excess जो fat था body रो, से body रो excess fat is converted to male hormones. So periods irregular, patient 3 मास 4 मास धरी menses हो नहीं, most you will see so many females, and तांकर period medicine खाइले जे periods हबो नाला हबो नहीं. Those females जेतल marriage करंती, pregnancy is again difficult काहे कि ना से मानकर ovulation हुए नहीं, egg release हुए नहीं. जदि pregnancy रहिला भी 3 times higher chances of miscarriage than a common woman. So PCOD is again another disease which जेतोला हम patients हम fellow consultants तक जानते बहुत तरह कौन हुए ना patient को बेसी आउ हमें counseling करूना, हमें गोटे contraceptive pill लिखी दो ako एटा किछ असुविधा नै तमे जल्दी छुआ करि पको परे आ एबे गोटे contraceptive pill रो कोर्स 6 मास दउ तो patient regularly प्रति मास cycles हबो patient भाबिबो जे ओह मोर periods correction हेला. No, that is only being done under medication. The moment medication काढी दियाबो patient रो same symptoms. So मु सबले patients को केबे भी contraceptive pill दिए नै. I counsel for a weight reduction, ताको बुझाए केमती ताको weight loss हबो, केमती से ताको target achieve करिवे, starve न करी weight loss केते required, what is the desired weight loss. Second, केते amount of exercise करिबा कथा. Third, what should be the lifestyle changes, so that because it is basically a lifestyle disease. And finally medicines. So medicines be not contraceptive pills but vitamins for the ovaries specifically, so that ताको eggs आवरी सुंदर ovaries काम करिवो and ताको cycles be regular हेबो. So this is how I like to treat, and I find it very interesting, and I don't treat in the traditional contraceptive pill method for PCOD. Superb, sir, superb. So one last message I want to Sure. I want you to give to the audience that are watching this episode. Message. Yes, sir. Yeah. So but it is a golden window for asking people to stay healthy, to stay fit, diet ठीक रखिबे, exercise regular रहिबो, because जो दुईटा disease हमें basically discuss कले endometriosis and PCOD, both are diet dependent to lifestyle dependent, exercises हेबा दरकार. And whenever जो symptoms आपन को कहली, especially for endometriosis, if you have, then please consult a specialist. Don't consult anybody who just is not giving you much of time, because anamnesis kahu, you need a patient listener to the disease. Only then endometriosis symptoms hame patient ko buchi pariba, otherwise the diagnosis will go wrong and goals she will finally land up in some other table. So the thing is, you please focus on your problems. Whenever you feel that you have this problem, then consult a specialist. That's all. Thank you so much for joining on Odisha Science today. आपन जो भी प्रति क्वेश्चन आंसर देले एंड जो भी बुझेले, आई एम श्योर कि कहारी किछि डाउट रहबनी. एंड इफ एनीवन जो ने देखुचंदी आज जदी तांकर कोनसी क्वेश्चन अछि, if they want to take appointment from Dr. GSS Mohapatra, then please आपन से इंस्टेड भी करंतु, because like sir said that it is not a single day वाला डिजीज कि आपन को जल्दी ठीक है जो या फिर एमती ओडी डिजीज जोटा कि आपन इमीडिएटली जानियो. It takes time. So if you have any doubt, then you can also consult Dr. GSS Mohapatra. Thank you so much for joining us on Atithi season 2. I am sure कि आपन से पुन थरे पुनी खूब जल्दी देखावा आउ किछि क्वेश्चंस नै कि हम आपन को डेफिनेटली साथ. Thank you so much. So you're wonderful. Thank you so much. It was a pleasure being here. Thank you.